हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम, सुस्वागतम, स्वागत है आपका आज के इस एक्सपर्ट टॉक लाइव सेशन में। टुडे इज आवर 49th live session. So today we'll be inviting Arpit Patidar, who will come and speak on creating business insights from data. So he will speak कि डेटा का क्या इंपॉर्टेंस होता है, व्हाट इज द इंडस्ट्री, हाउ इट वर्क्स एंड फ्यूचर क्या है उसमें, करियर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो let us welcome Arpit on the show. And before that, I would like to welcome you all once again. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए हमें डेली रेगुलर अपडेट्स के लिए। और नाउ इट्स टाइम टू वेलकम आवर गेस्ट। Hi, यस अर्पित, वेलकम, yeah, welcome. Hi, गुड how are इवनिंग। you? Good evening. Yes, I am fine, thank you for accepting our invitation, thank you for joining in today's Yeah, it's my session. pleasure. Yeah, so it would be our pleasure to have you on this show. And आपसे काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा मुझे और मेरी ऑडियंस को, बिकॉज दिस Okay. डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री इज समथिंग, यू नो, ग्रोइंग इंडस्ट्री, अपकमिंग इंडस्ट्री यू कैन सी। सो काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सो थैंक यू वंस अगेन। एंड as you know, today you will be speaking about creating business insights from data. So, yes, audience, Jai Srivastava, good afternoon. Thank you for joining in, Jai. Yes, audience, show your presence. Type in good evening, hi, hello. Yes, hi, hello, and like us, subscribe our YouTube channel, Vipul the Wonderful. Press the bell icon for regular updates from us. We'll be inviting different industry experts throughout the week, and they'll come and they'll share your experience, share their experience. तो आपको उनका experience share करेंगे, आपके live questions को भी answer करेंगे. So stay tuned and participate and ask your live questions also. So, yes, Arpit, let us start the session. Please let us know more about you, your life journey, your academics, and your आपने ये करियर क्यों सिलेक्ट किया उसके बारे में ऑडियंस को बताएं। और प्लीज लेट अस नो मोर अबाउट यू। Yeah. So currently, I'm working with bank in on the role of analytics lead, and I'm taking care of those analytics projects. So in analytics field, I am from last 4 years. Before that, I was doing MBA, and before that, I have done my BTech. I'm an engineer plus MBA, and I got to into analytics as during my MBA there were some courses on R programming, Microsoft Excel. So when I joined my organization, so there was an opportunity to work on the data projects. So I picked up my skills and I started contributing in the into analytics projects. Very good, very good. That's amazing. So, uh, excellent. And audience, we will also have a surprise quiz at the end of the session. As last yesterday भी एक सरप्राइज क्विज था, तो कल के सेशन में भी आप जाके कमेंट में सरप्राइज क्विज दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू यू नो गेट अ चांस टू विन the Amazon vouchers. So be active, stay tuned till the end, and do participate. So Arpit, let us start the session with today's first question. uh, why data is getting so much attention nowadays? Yeah. So data is getting so much attention because data analysis was being done from last 200 year 300 year into research, but collecting data was very difficult, very expensive. Now it has become very easy. So data is was like in a rare element a few years ago when the digital transformation was not there, but now as the digital transformation has been done, the data is with everybody. So
in past all the research has been done on the data. So people used to do survey, used to conduct tests in laboratories to collect data. So these was an expensive exercise, lot of cost used to involved into it. So now after digitalization, as everything is online, like we are going to book a ticket, so we are interacting with the machine. So lot of things we are doing by interacting with machine. Like now we are paying from our mobile phone. So that also with the interaction of machine. So you and understand that how many interactions we do with the applications built around us. So we will understand that many transactions between organizations, persons, businesses, non-businesses happens based on the application. So during that interaction, during these processes, operations, data is being collected, it is being stored. So once data is stored, data is there, it is with you. सो डेटा आपके पास में है, तो सबसे महंगी चीज क्या थी? डेटा करना। अब डेटा आपके पास आ गया है, तो अब क्या हो गया है कि अब आप डेफिनेटली रेडी होंगे कि यार मैं इसको एनालाइज करूं, मेरे मेरे लिए इसमें से कुछ मैं इंसाइट्स निकालूं, इसमें से कुछ ऐसी चीजें निकालूं जो मेरे बिजनेस को काम आ सके। सो पास्ट में क्या होता था कि रिसर्च करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस दूसरे होते थे, यूनिवर्सिटीज रिसर्च करती थी या रिसर्च कंपनीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज रिसर्च करते थे, बिकॉज वो रिसर्च टेस्ट करते थे, सर्वेस करते थे। बट अब कंपनियां भी खुद रिसर्च कर सकती है कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है। अब वो प्रोएक्टिव डिसीजंस ले सकती है, बिकॉज देयर डेटा इज विद देम। और अभी क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि जब कंपनीज बिजनेस करती थी तो मार्केट में जाती है, मार्केट को हम एज ए कंसिडर करते हैं। तो इन्वायरमेंट से उनके बिजनेस पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है, अगर डेटा अगर कलेक्टेड नहीं होगा, अगर मैं उस डेटा की समरी क्रिएट नहीं कर सकता, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मैं जब उस इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो उस पर मेरे बिजनेस पे उसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है। बट मेरे इंटरेक्शन के साथ में इन्वायरमेंट से, मतलब मार्केट से इंटरेक्शन के साथ में अगर मुझे डेटा मिल रहा है और अगर मैं उस डेटा की स्टडी कर सकता हूँ, देन आई अंडरस्टैंड कि मेरे बिजनेस के ऊपर मार्केट वेरिएबल्स जो चेंज हो रहे हैं या मार्केट का और एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सो डेटा has got so much buzz only because it is something everybody wanted to analyze data. Now data has come and people have started analyzing it. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो टेक्नोलॉजी के कारण डेटा एवोल्यूशन, डेटा कलेक्शन थोड़ा और एनालाइजिंग Yes, करना इजी हो गया है। तो उसके कारण yes, जो डेटा तो पहले भी था, बट अभी उसका जो यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, इसके कारण yes, इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। yes, Rightly said, very true. So स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कैन दे कलेक्ट डेटा अबाउट देयर बिजनेस, एंड उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है? प्लीज थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ। या सो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, तो पहली चीज ये है कि कौन से बिजनेसेस। तो बहुत सारे छोटे बिजनेसेस होते हैं लेकिन वो किसी की एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं या फिर कोई टूल यूज कर रहे होते हैं। तो पहले तो हमें उस एप्लीकेशन से, उस टूल से डेटा आ सकता है। और अगर कोई रिटेल स्टोर है तो देर इज एन सिस्टम, पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर होता है, तो पीपल कैन यूज दैट। सो if you are using POS machine and POS software for your sales, then you definitely can collect data about your sales customers there. So एक चीज हो गई कि आप जिस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप, अगर आप रिटेल फेसिंग है, कस्टमर फेसिंग है, तो आप कस्टमर फेसिंग सॉफ्टवेयर आपके, एक पीओएस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 1 लाख या उससे कमी होती है, ठीक है। तो अगर आपने एक पीओएस सिस्टम लाया आपके पास, तो आपके पास में सेल्स का पूरा रिकॉर्डिंग होगा कि क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, किस टाइम पे सेल हुआ है। एंड विद दैट यू कैन आल्सो कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग कस्टमर, कि कस्टमर कौन है, लाइक उसकी एज क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो कहाँ पे रहता है, ओके, उसकी इनकम क्या है, इफ
person is ready, people are ready to give their, if not the exact income. सो एक तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन वाला. थर्ड है अगर आपके इसमें इतना ऑटोमेशन नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, और आपकी डिस्पर्स टीम में अलग अलग जगह बैठती हैं, तो यू कैन आल्सो यूज टूल्स लाइक गूगल शीट्स. सो आप एक गूगल शीट्स पे एक डेटाबेस बना सकते हैं जहाँ पे आपकी बहुत सारी टीम्स है जो काम कर रही है, वहाँ पे डेटा फीड कर सकते हैं और एक सेंट्रलाइज शीट में वो डेटा कलेक्ट होके आ सकता है. सो ये बेसिक तरीके हैं. अगर एप्लीकेशन है, आपके पास बजट है कि आप एप्लीकेशन बिल्ड कर सको, दैट्स वेरी गुड. और यू कैन बाय एन एप्लीकेशन. लाइक फाइनेंस के लिए लोग एप्लीकेशन बाय करते हैं, सेल्स के लिए एप्लीकेशन बाय करते हैं. कॉस्ट इज नॉट दैट मच. सो उस एप्लीकेशन से आ सकता है. और अगर आप एप्लीकेशन का भी यूज नहीं कर सकते तो आप मैनुअल डेटा इनपुट कर सकते हो गूगल शीट का यूज करके, जो कि वेरी सेंट्रलाइज आपकी डिस्पर्स टीम एक एंड जगह डेटा डाल वेरी सकती वेरी इजी टू यूज एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब फ्री है, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब फ्री भी है, तो है. हाँ इसको फ्री यूज है, मतलब देखो उसका हाँ इट्स फ्री, दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड. दैट कैन बी एक्सप्लोर, बट कुछ ना कुछ टूल्स का यूज करके डेफिनेटली डेटा गैदर कर सकते हैं ना, उसका यस. यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, राइट. यस. सो what are the basic skills required to manage and analyze the data? या सो हमें सबसे पहले समझना होगा कि अगर किसी कंपनी के पास में डेटा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा है या किसी बिजनेस के पास डेटा है, तो वो किस फॉर्मेट में होता है. ठीक है. तो इफ देर इज एन एप्लीकेशन एंड यू आर इन ए कंपनी, so you can have in a database. So relational database आपके पास हो सकता है, MySQL database और any database. So that understanding of that database and how to interact with database, how to manage that database, this is the skill required. Or if you are not in a sophisticated organization, a small organization who is using the applications like फाइनेंस अकाउंटिंग की कोई एप्लीकेशन है, सेल्स के लिए एप्लीकेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो वेन एवर यू परचेज इन अ सॉफ्टवेयर, ऑलवेज गो एंड टेल कि मुझे डेटा चाहिए, मुझे इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए. तो जो उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या उनके जो कंसल्टेंट होंगे वो आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली आप वहाँ से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो डेटा कम्स इनटू CSV फाइल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल. ठीक है. तो फर्स्ट स्किल, अगर आपके पास डेटाबेस है तो आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना आना चाहिए. डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए आप SQL सीख सकते हो. बेसिक SQL आना चाहिए. सो अगर आपको SQL आते हैं, यू कैन इंटरेक्ट एंड प्ले विद द डेटा. ओके. और अगर आपने एक्सेल फाइल्स आपके पास है, ठीक है, सो द स्किल इज रिक्वायर्ड इज इन बेसिक एक्सेल्स एंड एडवांस एक्सेल. सो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपको आना चाहिए कि फाइल कैसे खोलते हैं. ठीक है. अलग अलग सो फॉर्मेट्स सो में कैसे इसके खोलते तो इसके लिए कोई एनी कोर्स और एनी हैं. डिग्री और एनी No, स्पेशलाइजेशन no, रिक्वायर्ड टू बी no. सक्सेसफुल इन There are दिस इंडस्ट्री? very YouTube videos available which can let you know how to use Microsoft Excel. So Microsoft Excel को कैसे, मतलब आप उसको देख सकते हैं, कैसे मर्ज कर सकते हैं, कैसे फिल्टर कर सकते हैं, कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं. और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है वो पाइवट टेबल. सो आप एग्रीगेटेड लेवल पे आप देख सकते हैं. लाइक आपके पास में ट्रांजेक्शन लेवल डेटा है कि आपकी ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं दिन में, ये प्रोडक्ट पे इतनी इतनी सेल हुई है. आपको पता करना है कि मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिका आज के दिन में. सो यू कैन यूज पाइवट टेबल टू नो दिस. सो परफेक्ट, बट डेटा. ऐसा मतलब आईटी स्पेशलाइजेशन या नॉन आईटी स्पेशलाइजेशन भी इस फील्ड में वेंचर कर सकते हैं, हाँ, कैसे मतलब? इतना इतना इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट. If नॉट someone दैट मच. start trying, he or she can do, he or she can pick up these basic skills. Very good, very good. And next question is, what are the business metrics we can create and track to improve sales? Yeah. So if we talk about some medium size enterprise or small enterprise, so we wanted to base this discussion on the entrepreneurs or small size on enterprises. So I want to say that daily sales, aggregation of daily sales should be tracked. You should know how much I have sold today.
Then on the running basis, daily day to day sales, like how much I sold on the first, second, third. So you can know that if my sale is dropping or picking up, or it is stable or not. So you, आपके हाथ में आपके सेल्स की नब्ज होगी. ओके, आई वांट टू से इनटू हिंदी. ठीक है. फर्स्ट ये, उसके बाद आप मंथ एंड मंथ एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी जनवरी में सेल्स कितनी थी, फेब में कितनी थी, मार्च में कितनी थी. तो आपको मंथली बेसिस का पैटर्न पता चलेगा. ठीक है. And one more thing that you should know is like month वर्सेस सेम मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर. लाइक इस जनवरी में मैंने कितना बेचा और पिछली जनवरी में मैंने कितना बेचा था. क्योंकि बहुत सारे बिजनेस सीजनल होते हैं. अगर मैंने लास्ट ईयर जनवरी फरवरी में बहुत सेल किया था, दिसंबर से ज़्यादा था, तो इस मंथ में भी मेरी दिसंबर की सेल से जनवरी फरवरी की सेल ज़्यादा होनी चाहिए. अगर नहीं हो रही है तो बिजनेस में प्रॉब्लम है. एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन, हाउ वी कैन हेल्प आवर बिजनेस फ्रॉम डेटा. ठीक है. True. So, and once we know this, we can also dig down at another levels, like products level. If I'm selling more products, so मुझे भी देखना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी में कैसे सेल्स हो रही है. सो नॉट, फर्स्ट स्टेप इज ओवरऑल, सेकंड स्टेप शुड बी द ऑन द प्रोडक्ट बेसिस. ठीक है, कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, किस प्रोडक्ट में ज़्यादा किस प्रोडक्ट में ज़्यादा सेल्स हो रही है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई मुझे कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट मेरे बिजनेस को कम कर सकता है, कौन सा प्रोडक्ट मेरे बिजनेस को हटा सकता है. सो यू गेट द प्रोडक्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग. यू कैन आल्सो डू प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस फ्रॉम दिस, कि भाई एक अच्छा प्रॉफिटेबल एक प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सो यू कैन पुट योर रिसोर्सेज देयर. सो ये एक हेल्प हो सकती है. सेकंड, अगर आपके ज़्यादा स्टोर हैं, अगर आपके एक सिटी में 4-5 स्टोर हैं, तो आप स्टोर लेवल पे एनालिसिस कर सकते हो कि भाई कौन सी लोकेशन पे, अगर आप ज़्यादा लोकेशंस में भी सेल्स करते हो और आपके पास लोकेशन वाइज डेटा है, सो यू कैन आल्सो एनालाइज ऑन लोकेशन टू लोकेशन बेसिस, कि कौन सी Very, लोकेशन पे ज़्यादा सेल्स हो रही है, कौन सी लोकेशन पे कम हो रही है, कब ज़्यादा हो रही है, वो भी आप टाइम के हिसाब से भी, प्रोडक्ट वाइज भी वहाँ पे एनालाइज कर सकते हो. ठीक very, है. very rightly said. Yeah, Yeah. and one point more is the demographic analysis of customer, sales analysis based on the demography of customer. Like कि अगर possible हो और आपने डेटा कलेक्ट किया है कि वो कस्टमर कौन है, उसकी एज क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है. ओके. तो आप ये एनालाइज कर सकते हो कि यार मेरा जो, मेरे स्टोर से सैलरीड प्रोफेशनल्स ज़्यादा शॉपिंग करने आ रहे हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा करने आ रहे हैं, या बिजनेस वाले ज़्यादा करने आ रहे हैं. सो इट विल बी वेरी इफेक्टिव टू मैनेज योर स्टोर. अगर आप ये पता कर दो कि मेरे स्टोर पे तो सैलरीड ज़्यादा आ रहे हैं, डेफिनेटली यू विल बी हाईली अटेंटिव इन टू फर्स्ट 10 days of a month, because it is the time the most sales, most of the sale will take place of your store. Okay. Right. सो अगर हमने डेटा को इस कैटेगरी में बाइफरकेट करके उसकी ग्रैनुलरिटी में चेक किया, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हमें पता चलेगी. ओके. वेरी ट्रू. सो ऐसे ऐसे 2-3 टूल्स या टेक्नोलॉजी बताइए जो एनीवन शुड हैव. अगर मुझे ये इंडस्ट्री में, डेटा इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, तो ऐसे कौन से टूल्स है जो मस्ट हैव है सक्सेसफुल होने के लिए? हाँ. सो इफ समवन इज अ स्टार्टर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज मस्ट. ओके. सो बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ही शुड नो हाउ टू डू वी लुकअप, कि मल्टीपल डेटा है उनको ज्वाइन कैसे करना है. ठीक है. उसके बाद में अगर थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड होना है, अगर यू आर वर्किंग इनटू ए कंपनी, सो अभी हम बिजनेस एज ए पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑनर्स की बात कर रहे थे, लेकिन इफ यू वांट टू मेक करियर इनटू डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, सो दिस इज सिंपल, simple information available on online, and the expert will also say कि आपको SQL आना चाहिए, आपको R या Python जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आना चाहिए, एंड आपको once you go into field you should also know how to deliver more value. So यहाँ पे कुछ डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स भी होते हैं
ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विजुअलाइजेशन कर सकते हो, बट इफ यू हैव एन 50 पीपल जिनको आपको दिखाना है, अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सीख सकते हो, टैब्ल्यू सीख सकते हो, जो कि आपको डेटा विजुअलाइजेशन अच्छे से करते हैं। सो एंड मोटा सो मोटा, इट इज, हाँ, मोटा मोटा, मोटा मोटा एक्सेल एंड एसक्यूएल इज बेसिक एंड यस, प्राइमरी थिंग्स वन यस, शुड हैव। यस, बाद में तो माइक्रोसॉफ्ट आपने जैसे एक्सेल इज बताया, मस्ट। एक्सेल इज मस्ट है, देन कम्स द एसक्यूएल, बाद में तो पावर बीआई एंड यस, पाइथन एंड आर लैंग्वेज एंड ये सब तो एकदम एडवांस लेवल का हो जाता है, बट यस, बेसिक इज एक्सेल एंड सेकेंडरी सेकंड लेवल इज एसक्यूएल, ये दो चीजें मस्ट हैव है, राइट? यस। Very good, perfect. So, yes, thank you, Mega, for joining in. Yes, thank you, Hafizul Malik, for joining in. We thanks for joining in, and stay tuned. Yes. So the next question is, what are advanced things we can do with this data, like collateral, time series analysis, predictive analysis? तो ऐसे क्या क्या यूज कर सकते हैं, और बिजनेस में कुछ ऐसे एग्जाम्पल के साथ हमें बताइए कि कैसे इसका यूज हो सकता है, और क्या कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज या ऐसा कुछ हो आपके करियर में, तो वो बताइए हमें। हाँ, सो अभी हमने जो अभी तक बात करी है वो एज ए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बात करी, कि हम सेल्स को ऐसे देख सकें कि कहाँ क्या हुआ है, कौन से प्रोडक्ट में क्या हुआ है, कौन से लोकेशन में क्या हुआ है, बट वी कैन आल्सो फाइंड आउट रिलेशनशिप्स. So if you have a quality data, so this is an advanced thing, okay. You need some good education on good practice to do this advanced thing. So you can identify कि relationship क्या है, तो उनके examples है कि क्या आपकी sales एज वाइज, लाइक एज और आपके सेल्स में, लाइक अगर मैं एज के बेसिस पे सेल्स निकालूं, तो क्या देर इज एन कॉरिलेशनशिप कि मेरी एज बढ़ रही है तो क्या मेरा सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, कि क्या 30 ईयर person buying some amount, sales amount, and 35 years is higher than 30-year old. Okay, so 35-year-old is buying more than the 30-year-old more. So we so there isn't a positive correlation. There might be negative correlation. If your store is attracting more younger people, more teenagers, then you will find that there is a negative correlation. As age increases, people reduces their purchase from your store. So by that you understand what is the nature of your business, who is preferring your business. Okay, again you can also do the time series analysis. So you don't know when the which product will be sold more, which product will be sold less. So you don't know about demand if you don't do time series analysis, because अभी बिजनेसेस के पास क्या होता है ना, अजम्पशंस होता है कि इस टाइम पे इतना बिकेगा, उस टाइम पे इतना बिकेगा, पास्ट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो इतना देखो बात वही है कि वो साउंड नहीं होता, वो बेसिकली बैक्ड बाय डेटा नहीं होता है, बट इफ यू हैव डेटा यू कैन strengthen your understanding, you can get understanding by backing it from data. So अगर आपके पास डेटा है, आप उसे टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसे डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि यार मेरा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये मार्च में बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आप उसका शॉर्टेज नहीं रखेंगे, आपकी इन्वेंट्री उस प्रोडक्ट की फुल रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आप ये पता कर सकते हैं कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के साथ में बिकता है, क्योंकि ये कस्टमर आपके इधर आता है स्टोर में, तो व्हाट ही डज कि वो एक प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, 2-3 खरीदता है, और अब जगह अगर आपके पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स का डेटा है और मल्टीपल सेल्स ट्रांजेक्शन का आपके पास में डेटा है, तो आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ बिकता है, लाइक कि मेरा माउस के साथ में सी टाइप चार्जर बिक रहा है, ठीक है, या फिर आप ये देख सकते हो कि यार कोल्ड ड्रिंक के साथ में मेरे चिप्स बिक रही है, आप ये देख सकते हो कि मिल्क के साथ में मेरा आटा बिक रहा है ज्यादा, कि हर एक पर्सन आता है मिल्क भी लेता है आटा भी लेता है, it will not happen because milk is fast moving na, atta people will not purchase, that is not a right example, but बट it can मिल्क के, happen. या मिल्क के साथ ब्रेड या या बिस्किट्स या, ब्रेड बिकता है, बिस्किट बिकते हैं, ठीक है, तो सही। आप अपने स्टोर में सामान भी इस तरह से रख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मान के चलो कि आपका आपके 80% कस्टमर ने ब्रेड और बिस्किट एक साथ में खरीदा है, ठीक है,
तो आप चाहते हो कि आपका जो कस्टमर दूध लेने आए हैं वो आपको पूरा स्टोर राउंड राउंड लगा के जाए कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे कि दूध बिस्किट सबसे सामने रखेंगे, दूध सबसे एंड में रखेंगे, क्योंकि दूध लेने सबसे एंड में जाएगा और आपको पूरा स्टोर देख के आएगा, तो आपके नए प्रोडक्ट भी देखेगा। Very So true. these are the things. These are the entry cases of data you can get into and bring out the lot of information from data. Wow, very very अमेजिंग, राइट एग्जाम्पल आपने बताया कि यू कैन सी कि कहाँ पे कम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसके साथ क्या सेल हो रहा है। सो देर आर लॉट ऑफ ट्रिगर पॉइंट्स, काफ़ी कुछ Yes, चीज़ें आप सेंस कर सकते हैं डेटा के थ्रू। वेरी yes. राइटली से। नाउ देर इज़ वन लाइव क्वेश्चन फ्रॉम जय श्रीवास्तवा। ही इज आस्किंग, सर व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है विच शुड वी शुड अवॉइड while collecting data and then analyzing the data? तो So the first mistake while collecting data is the you should collect what I should say that picture should be holistic. Like ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक टाइम पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे टाइम पे नहीं कर रहे हैं. So your data should be complete. It should provide, there should not be any data leakage. लाइक आपने कुछ कस्टमर्स का डेटा लिया, कुछ का नहीं लिया. अगर आपको मंथली सेल्स एनालाइज करना है तो आपको मंथ का पूरा सेल्स का डेटा लेना है. नहीं तो क्या होगा कि आप पर्टिकुलर एक सेट उठा लोगे, फिर उस सेट का अलग पिक्चर क्रिएट हो जाएगा और वो पिक्चर विल बी नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बिजनेस. सो वट एवर डेटा यू टेक टू एनालाइज शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बिजनेस. सो अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो मिस्टेक है. very true. Yes, Jay, hope we have answered your question. Thank you, Rupesh ji, for joining and appreciating. Thank you so much. So now, like one question is, what are the career opportunities? Generally, data analytics में सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी रेंज या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं? और आपने जैसे बताया हर एक इंडस्ट्री में डिमांड तो है, बट कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा डिमांड है? इफ़ यू कैन थ्रो अ लाइट ऑन इट. Yeah, so I will not speak about salary. Okay, I because there is a varying range and I don't want to like influence decision of people, so I keep it on them to take their research. बट अगर आप इंडस्ट्री की बात करें कि कहाँ पे डिमांड है, तो बेसिकली आई विल लेट यू नो कि आप one industry where the data is in a huge quantity is the bank BFSI sector, banking, finance, insurance. So इस इंडस्ट्री में डिमांड है. उसके बाद में इट इज आल्सो इन द product based companies like applications like Zomato, Big Basket, because you only see that which companies are interacting much with the customer. The companies who are having higher interaction with the customers, they will be a huge data and they will require more data analysts. Very true, very true. So now moving on to one interesting phase of our session, rapid fire round. Which is your favorite movie? uh, my favorite movie is Talash of Amir Khan and Kareena Kapoor. Which is your hobby? आप क्या Yeah, पसंद my करते hobby हैं? is reading books is my hobby. Very good, very good. Great. So, yeah, one final words for our audience. आपका success mantra, one thing which motivates you, and one last message which you want to give to our audience. Please, बताइए हमें. Yeah, so as the topic of this session is about data and data analytics, so I will tell to audience that they should not ignore data at this point. Okay, so data is everywhere. So आप डेटा का यूज़ हर चीज़ में कर सकते हैं. अगर आपके पास में मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में भी आपके मोबाइल यूज़ से रिलेटेड डेटा होता है. सो डेटा एनालिसिस इज अ थिंग कि जहाँ डेटा है आप हर जगह आपकी चीज़ आप देख सकते हो. ओके, सो अभी क्या है ना, डेटा का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है. ठीक है, इट्स लाइक इट इज़ विद एवरीबडी. ठीक है, तो True. फर्स्ट थिंग इज दिस
यू हैव डेटा एवरीवेयर। अगर आप इंटरनेट पे भी जाएंगे, आपके फेसबुक पे देखेंगे, या फिर आप गूगल में जाते हैं तो आपकी सर्च हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने कौन सी वेबसाइट ज़्यादा विजिट करी है, कौन सी वेबसाइट कम विजिट करी है। सो इट्स नॉट अबाउट हेल्पिंग बिजनेसेस, इट कैन आल्सो हेल्प यू। ठीक है, अगर आप आपके खुद के बारे में जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको समझ पाते हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट है, तो लोग कुछ ट्रिकर्स लगाते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि यार मेरा तो इस एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम चला गया, ये तो मेरे लिए इतनी यूजफुल नहीं थी। सो दैट इज आल्सो ए डेटा डेटा पॉइंट कि यार मेरा तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाली एक्टिविटी में कम ही टाइम दे पा रहा हूँ। सो दिस इज आल्सो ए डेटा। ओके, सो एंड other thing that I want to tell is that Microsoft Excel is must. Who want to build career in corporate, he should be comfortable with Microsoft Excel. And another thing is that if you can learn technology, learn it. There are various courses available online, for SQL or your data analytics techniques like regression, logistic regression, and machine learning techniques. Okay, so the field is vast, because जब शुरू मैंने करा था तो मैंने यही बोला था कि डेटा एनालिसिस नया नहीं है, कई सालों से डेटा एनालिसिस हो रहा है, इसमें बहुत सारी रिसर्च, जो भी रिसर्च होती है वो डेटा एनालिसिस के बेसिस पे ही होती है, बट डेटा हमारे पास है। सो इट इज़ नॉट एज सिंपल कि आपने एक कोर्स करा, एक महीना कर लिया और आप बोलेंगे कि आप मास्टर हो गए। ठीक है, देर इज़ अ मच टू लर्न। ठीक है, लोग अभी भी सीख रहे हैं और बहुत कुछ इसमें सीखने में, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा ही होगा। क्योंकि अभी लाइक कि आप बात करते हैं कि अगर मैं बात करूँ स्पैम डिटेक्टर की, कि मेरे मेल के बॉक्स में स्पैम मेल, अगर मेरे को बोलना है कि यार ये मेल स्पैम है तो कैसे। ठीक है, तो आप रूल बेस्ड उस पर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्पैमर्स होते हैं वो नया फंडा लेके आ जाएंगे और आपके ईमेल बॉक्स को फिर से स्पैम कर देंगे। तो यहाँ पे फिर मशीन लर्निंग का ही यूज़ कर सकते हैं हम, कि डेटा जो होता है मेल्स के बारे में उसको हम रखते हैं और उसके ऊपर फिर हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये स्पैम है, ये नहीं है, देन मशीन लर्न, Very, it automatically learns. As the spammers get intelligent, our machine learning model gets intelligent. So very true. so यहाँ पे फ्यूचर में मशीन लर्निंग will be highly used. So there will be many roles which will be replaced by machine learning, but there will be many roles which will be created because of the use of the machine learning. True, true. It's So like two sides of the coin. yes. So my only request is technology is enabler, so don't run away from technology. Keep upgrading. Keep upgrading, and it is not like that you are the commerce graduate or arts graduate, you can't learn technology, Very because true. data analysis is not the application building, sophisticated सर्वर मेंटेनेंस, सिंपल डेटा। Very, अगर आप जो एक्सेल में कर very सकते हो true. फिर आपको आगे करना है। ठीक है। So that's amazing, amazing message from you, that keep learning, don't give up, keep upgrading yourself. Thank you so much. Yeah, thank you, Kumar Vasuya, for joining in, and thank you, Rupesh ji, for your message that AI is the key in the business world. Data are being used by AI and providing amazing results. You rightly said. Yes, thank you, Arpit for joining in, and thank you for your amazing inputs. You rightly said how we can grow in this industry and what are the requirements. Yeah, so audience, you can get in touch with Arpit on his LinkedIn. This is his LinkedIn ID, Arpit Patidar. You can get in touch with him. Thank you, Arpit, for joining in today, and hope to see you again with some different topic. Yeah, And we it wish was you all the best. pleasure to interact. Yeah. Yeah, thank you very much. Thank you so much. Have a good time. Yeah, thank you. Thank you. Thank Yeah, bye bye. Yes, audience. So you can definitely, keep tuning us for the different subjects expert talk. हम ऐसे ही every week आते रहेंगे. रुपेश जी, thank you. Jai, thank you for the joining us. Yeah. Hope to see you again and again every week. Do subscribe our YouTube channel, Vipul the Wonderful. Press the bell icon to get our regular live updates. And
As I've said, we will have a surprise quiz. So today's surprise quiz is, अर्पित जी ने ऐसे कौन से दो टूल्स बताए थे जो रिक्वायर्ड है बेसिकली टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री. सो अगर आपने सेशन अभी ज्वाइन किया है या बीच में से ज्वाइन किया है तो डू वॉच इट अगेन एंड reply in the comment that which tools are required to be successful in this industry. Yes, audience, this session was powered by post resume HR consultancy. We are a recruitment consultancy providing recruitment services across India, Africa, and Gulf since 2007. So do connect with us if you are looking for any career guidance or job assistance. If you are a corporate and looking for any uh, talent solutions, then do connect with us. We will be happy to help you with the best of solutions. Yes, Jai, do answer your question right after this session. We will pose this question. So answer that question in the reply of that comment. Thank you so much, audience. स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे. और दिस वाज 49 सेशन. इसके पहले के जो भी 48 सेशन हुए हैं आप उनको हमारे यूट्यूब चैनल विपुल द वंडरफुल पे जाके देख सकते हैं और अपने नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं. यू नेवर नो कौन सा नॉलेज किसको यूजफुल हो जाए. सो डू check all the sessions we had till now and do comment on all the videos. जो भी आप देख रहे हैं उसमें हमें कमेंट कीजिए टू मोटिवेट अस, टू हेल्प अस विथ योर ऑनेस्ट फीडबैक, योर रिव्यू. So audience, wishing you great luck, stay blessed, take care, stay tuned. See you next time with different expert, and that will be a great session because that will be our 50th live session. So next Friday हमारा 50वां एक्सपर्ट टॉक लाइव सेशन होगा. सो सी यू नेक्स्ट फ्राइडे. एंड हम कल के और आज के सेशन के जो क्विज विनर्स है वो भी अनाउंस करेंगे. एंड दैट विल बी अमेजिंग सेशन. Thank you so much. See you. Take care. Stay blessed. Thank you.